Where is everyone? Come on, guys, pick it up. I have 10 minutes. Pick it up. Join in fast. You guys are too slow. 20, 22. Pick it up. Let's go. Good. Good. Very good. Good evening, Instagram. How's it going? Long time no see. Haven't you noticed? I am on my best behavior now. I didn't fight with anyone. I didn't call anyone out. I'm on my best behavior. No profanities, no foul language. I am improving. My behavior is improving. But Akash Chopra has a problem. I don't have a problem with Akash Chopra. Akash Chopra from We Are Stupid has a problem with a video I did with Sridhar all the way back on May 22nd of this year, 2 months ago. And in response to that video, he made a video today on Carnitine supplementation. Now, if you go back and watch that video, which I did with Sridhar on Carnitine supplementation, I didn't take Akash Chopra's name. I had no idea about Akash Chopra's opinion on Carnitine supplementation. But it seems like Akash Chopra watched that video. He took 2 months to prepare, and today he released a 20-minute long video. What sort of behavior is this? What did I do to you? Listen, everyone, I'm trying, okay? I'm trying my best to improve my behavior, to become more kind, to become more polite, to be more gracious. That debate I had with Aman Bindra, I'm trying to learn from Aman Bindra. I'm trying to improve my conduct. I'm serious. But every time I try, someone has a problem. Someone has a problem with my stance on soy, on carnitine, on powerlifting, on depression, on anxiety, on the leg extension, on Menno Henselman's stupid article on how to optimize exercise selection. By the way, how is Menno Henselman's doing? He hurt his back while bench pressing. Multiple disc herniations, by the way. While doing some dumbbell bench pressing. He doesn't understand how he hurt himself. Perhaps, Menno, if you
had studied my breakdown of your stupid article, The 7 Principles of Exercise Selection, you may have improved your approach to exercise selection. You could have saved your back, and you could have saved all the students you teach. Who pay you to learn. But of course, your nonsense is also available to the public, like that stupid article, The 7 Principles of Exercise Selection. Having said that, let's come back to Akash Chopra. I have not seen that video in its entirety, but when Akash Chopra starts that video, he says, this is his 4th, 5th or 6th video which he has done on carnitine supplementation. The question I have for Akash is, if you've already made videos on carnitine supplementation, more specifically, your stupid stance on carnitine supplementation, why make another one? If you disagree with my stance on carnitine supplementation, you could have simply reached out to me and we could have scheduled a discussion and we could have spoken about our disagreements, and then the world can decide for themselves whether they should choose carnitine supplementation for themselves. What's the problem? You have received comments. You've deleted a lot of comments, but you've also replied to a lot of comments. And people have encouraged you, not just to debate me, but I believe Tejas also has a disagreement with some of your claims. So they've encouraged you to debate Tejas. What's the matter? It's just a debate. You're an ex-Air Force officer. More specifically, an ex-Indian Air Force officer. But it seems like you do not want to learn from us Indians. Because when someone asked you, why do you not debate Aman Duggal? He disagrees with your stance on carnitine supplementation. What did you say? Are all the researchers at examine.com stupid? Is the NIH stupid? The National Institute of Health, not the Indian National Institute of Health, the United States National Institute of Health. Is Brad Schoenfeld stupid? That's what you said. It seems like you have your authority figures, people you look up to.
And at least to you, they are legitimate authority figures. So if I were to claim that you are making an appeal to authority, you can respond by saying that in your eyes, they are legitimate authority figures. I disagree. And I'll tell you why. Let's talk about examine.com. Saul Orwell's examine.com. Or is it Kamal Patel's examine.com? What is examine.com? They claim to be an unbiased, independent, evidence-based entity devoted to spreading scientific knowledge about dietary supplements. That's what they claim. And that's what you believe. Do you know examine.com like I do? Do you know people who have worked for examine.com like Alex Leaf? Are you sure someone like Alex Leaf, who's responsible for reviewing the literature on these different dietary supplements, are you sure someone like Alex Leaf knows what he's talking about? Because I called him out last year. And guess what happened? He went running just like Menno Henselmans went running, just like Mike Israel went running, just like all the Gora Chamris who you follow, who you learn from, who you copy. All of them go running when they hear one name from India. You say you have videos on carnitine. You say you have articles on carnitine. You even have a book which reviews the literature on carnitine, which you sell for 99 rupees. Why don't you just tell everyone the truth? That they don't have to buy your book for 99 rupees. They can just go on examine.com. Because that's where you copy from. Examine.com, Brad Schoenfeld, the United States NIH, उन्होंने बोल दिया तो तूने मान लिया. Clap for Akash Chopra, everyone. YouTube की शान, इंडिया की शान, आकाश चोपड़ा. गोरा चमड़ी जिंदाबाद. अरे पर आकाश सुनना, ये देख, मेरी भी चमड़ी गोरी है. और हमारी भी जबान गोरी है.
क्योंकि जिन गोरों को तू फॉलो करता है उनसे अच्छी अंग्रेजी हम बोलते हैं। और हम भी पेपर पब्लिश कर सकते हैं। क्या करना है, पैसा ही देना है ना। अंग्रेजी लिखनी है, साइंटिफिक अंग्रेजी, नॉर्मल अंग्रेजी नहीं, साइंटिफिक अंग्रेजी। ये क्या है तुम्हारा एविडेंस बेस्ड का गेम। चलो तुमको थोड़े एविडेंस बेस्ड शब्द सिखाता हूं मैं, कैसे लिखते हैं साइंटिफिक पेपर। अगर क्रिएटिन के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है या वीडियो बनाना है, आप दो तरीके से बना सकते हो। एक, आप हिंदी में बना सकते हो। आप बोल सकते हो, दोस्तों, साथियों, वर्कआउट के बाद 5 ग्राम क्रिएटिन लो और 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे तो आकाश चोपड़ा आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आप ऐसे बोलो, हमारी जबान में बोलो, सुनो। After performing a thorough review of the literature on creatine monohydrate supplementation, we have concluded that the most potent dose to develop strength and muscular hypertrophy appears to be 5 grams for the vast majority of the population. We have reported no adverse effects. The key word here is adverse. Side effects नहीं बोलने का, adverse effects. We have reported no adverse effects. And it is our strongest recommendation that you consider adding 5 grams of creatine monohydrate after a bout of resistance exercise. Post workout नहीं बोलने का, after a bout of resistance exercise. अभी ये जो गोरे हैं इनको इतना भी नहीं मालूम है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से दिखाता हूं तुमको। ये है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, ये है ना रेजिस्टेंस। डंबल दिख गया तो रेजिस्टेंस दिख गया। पर जब अपन कार्डियो करते, कार्डियो दौड़ लगाते, वो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से कहां से हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। योगा जब अपन करते वो रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे बोलो, आप भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ोगे जिस तरह हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। और इनके साथ नेटवर्किंग करो, दोस्ती बनाओ, कभी कभी बुलाओ इनको इंटरव्यू के लिए। एरिक हेम्स को बुलाओ। एरिक हेम्स ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था वीकेंड बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। छापा तो पूरा प्रेजेंटेशन मेरा, क्रेडिट दिया उसने मेरे को सिर्फ 2 टेबल्स का। लेकिन वो
न्यूजीलैंड में बड़े प्रोफेसर है ना, पीएचडी किया उन्होंने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। जब बात करते तो अंग्रेजी में बात करते, अच्छे अच्छे शब्द वापरते, एविडेंस बेस्ड शब्द, उनका वोकैबुलरी अच्छा है, काफी नॉलेजेबल है ना, बहुत नॉलेज है ना एरिक हेम्स को। तो ये वीडियो भेजो एरिक हेम्स को। एरिक हेम्स, this is your old friend Aman Dugal. You claim to be evidence-based, but you are associating with idiots in my country who are anything but evidence-based. And you seem to be debating them as well, and of course, because they're idiots, they're my puppies, we are able to claim easy victories in those debates. Why don't you debate me, Eric? Let's see how much you know. Akash Chopra, why don't you ask Brad Schoenfeld to debate Aman Dugal? I'll be polite, I promise. See, my behavior is improving. बुलाओ ना, तुम्हारी गोरी चमड़ी को बुलाओ ना, अमेरिका को बुलाओ और हमसे बात करवाओ फेस टू फेस। तुमको दिखाते हैं कितना आता है इनको। मेरे यूनिवर्सिटी में अमेरिका के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अमन दुग्गल यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नहीं दुनिया की, फिटनेस इंडस्ट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स ये बाकी सारे गोरों से अच्छा सिखाते हैं। ये सही सुना तुमने, हमारे स्टूडेंट सिर्फ कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो सिखाते भी हैं। एक्सरसाइज सिखाते हैं, N1 एजुकेशन से अच्छी एक्सरसाइज सिखाते हैं, NSCA से अच्छी एक्सरसाइज सिखाते हैं। विश्वास नहीं होता है तो ज्वाइन करके देखो। आपको मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं है तो मेरा कोर्स मत ज्वाइन करो, मेरे स्टूडेंट्स का कोर्स ज्वाइन करो। और फिर मेरे को बताओ कि कौन सा एक्सरसाइज कोर्स ज्यादा अच्छा है, वो गधे कासिम हैंसन का कोर्स या मेरे। Sorry about that, I got a call, I'm back. Rahul, don't call me, man. It's live, it is what it is. So, if you don't like my attitude, you don't have to join my course. You can join my students' courses and you can learn from them. And one more thing, because I'm a little short of time, by now you must have realized that Akash Chopra is not going to show up, but you can send this video to Akash Chopra, you can send this video to Eric Hems, you can send this video to Brad Schoenfeld, and you can send this video to that coward Alex Viada. I'll tell you why he's a coward. Alex Viada issued a public debate challenge titled "Prove Me Wrong." He blocked me, and then his stupid assistant sent me a Google form, which I filled and sent him. He still hasn't got back to me.
He still hasn't reverted back. Because he wants you to prove him wrong. He doesn't want me to prove him wrong. He wants someone who respects him, who thinks highly of him, to prove him wrong, because when someone earns your respect using cheap, evidence-based tactics, that is what this whole evidence-based tagline is. It's a cheap tactic, an authority building tactic, and nothing else. I'll teach you how to become evidence-based right now. Learn how to write and speak English, and if you can't write and speak English well, just write English and get Grammarly Premium. And then find a few studies on the United States NIH website. Find a few. Observe how they write, observe their scientific writing, and integrate some of that vocabulary into your writing. And you, my friend, will become evidence-based. हमने एक्सरसाइज ये गोरे गधों से नहीं सीखा. हमने एक्सरसाइज हमारे इंडियन प्रोफेसर से सीखा है, H.C. वर्मा से सीखा है. हमने न्यूट्रिशन एलन एरेगॉन से नहीं सीखा. हमने न्यूट्रिशन डॉक्टर अमोल राउत से सीखा है. इसलिए हमारा न्यूट्रिशन कैलोरीज, मैक्रोज और माइक्रोज पे खत्म नहीं हो जाता है. हम फूड साइंस की बातें करते हैं, फूड केमिस्ट्री की बातें करते हैं, फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, फूड का स्टोरेज कैसा होना चाहिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फूड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करते हैं. और जाने से पहले एक और चीज बोलूंगा. मेरे पे आकाश चोपड़ा ने एक इल्जाम लगाया. बोला कि मैं कार्निटीन को इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि कार्निटीन बेच के मैं पैसा कमाता हूं. मेरे को बताओ कौन सी सप्लीमेंट कंपनी को हमने आज तक प्रमोट किया है? नाम लो. हमने बहुत सारे सप्लीमेंट कंपनीज के साथ काम किया है. किन किन के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, किन के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा बिगड़ गया है. लेकिन मैंने आज तक मसल प्लेस को प्रमोट नहीं किया, माई प्रोटीन को प्रमोट नहीं किया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं किया, बिग मसल को प्रमोट नहीं किया. और आकाश चोपड़ा आंवला और एलोवेरा जूस को भी प्रमोट नहीं किया, शिलाजीत प्रो को भी प्रमोट नहीं किया, अमेरिकन वे प्रोटीन को भी प्रमोट नहीं किया. सप्लीमेंट बेचता तू है. बायस्ड तू है. ये लिख के ले लो राइटिंग में. माय प्रोटीन अगर मेरे को 1 करोड़ रुपया भी ऑफर करेगा आज या 10 साल के बाद, मैं माय प्रोटीन को यह दिखाऊंगा. माय प्रोटीन मेरे को यह दिखाएगा, मैं माय प्रोटीन को यह दिखाऊंगा.
हम किसी सप्लीमेंट कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं और कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद के दम पे पैसा कमाते हैं। हमको जो बोलना है हम बोलते हैं, हमको जो करना है हम करते हैं, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते हैं, नाम लेके बात करते हैं। तो आकाश चोपड़ा, वी आर स्टूपिड, वो चैनल का नाम चेंज कर, वो वी निकाल और उसको आई कर, आई एम स्टूपिड। ठीक है, ये तेरा कॉपी पेस्ट का गेम मैं समझता हूं। ये यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के जो डफर फॉलोअर है तेरे, वो नहीं समझते हैं। वो तेरी गांड चाटेंगे और चाटते रहेंगे, पर मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला ना, तो फिर शांत बैठ और बना ना वीडियो। क्या को फालतूगिरी करता कमेंट्स में। एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, ये कहानी मेरे को मत सिखा। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और तेरी उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया। ठीक है, तो ये एक्स एयरफोर्स, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पैसे बचाना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ जो चूतिए बच्चे यूट्यूब पे, चूतिए बच्चे इंस्टाग्राम पे, उनको सुना, वो सुनेंगे। क्योंकि एक और चीज बता देता हूं जाने से पहले, तुम सब जो देख रहे हो ये वीडियो, तुम सब चूतिए हो, सब। सब चूतिए हो। तुमको चूतिया बनाना बहुत आसान है। तुम कुछ करोगे नहीं लाइफ में, तुम सिर्फ गांड चाटते रहोगे, यूट्यूब पे फालतू वीडियो देखते रहोगे और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहोगे और अमेरिका की चूतिया नेटफ्लिक्स के टीवी शो देखते रहोगे। यही औकात है तुम्हारी। जाओ देखो जेफ निपर्ट की वीडियो, ब्रैड शोइनफील्ड की वीडियो। अरे वो तो वीडियो नहीं बनाते, वो तो पोस्ट डालता है। और अक्ल के दुश्मन को, वो ब्रैड शोइनफील्ड, उसको बुला रहा हूं अक्ल का दुश्मन। ए ब्रैड, ये रुको, उसको स्निपेट भेजो, ये अंग्रेजी में बोलते हैं। ब्रैड शोइनफील्ड, यू आर एन इडियट। You didn't even realize how much stimulus you're providing your biceps, more specifically your elbow flexors, when you're performing that fly with bent elbows, and you make a dozen other mistakes, man. Your 3-tier hypertrophy model is also fallacious. You know nothing, Brad. You're a personal trainer, and then you got your stupid PhD, and then you start playing that evidence-based game. I understand your stupid evidence-based game, okay? So anyway, I tried my best, okay, to improve my behavior, but in the end, the truth came out. Wait, I should end this video on a good note. Shouldn't I say, love you दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज कर लो यार, कोर्स खरीदो ना अपना, प्लीज। अरे मत खरीदो, मत खरीदो, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, फिर भी छापेंगे। हमको आता है कैसे आगे बढ़ते हैं, हमको आता है कैसे छापते हैं। और अगर तुम नाराज होगे
और कल अगर हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? हम आके तुमको सॉरी बोलेंगे, 3-4 और वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो वीडियो बनाना आसान काम है हमारे लिए। जब हम लाइव आ सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, आंखों में आंख मिला के बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, यूट्यूब तो बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। आएंगे, तुमको थोड़ा बहुत, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ज्ञान बांटेंगे, तुम खुश हो जाओगे। फिर तुमको लगेगा अमन दुग्गल ज्यादा नॉलेजेबल है। तुम्हारे पास सिर्फ वो ही है, तुमको सिर्फ लगता है, तुम्हारे पास सिर्फ फीलिंग है, एक इंट्यूशन है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तो फिर तुम कैसे बता सकते हो कि उसके पास नॉलेज है? हाँ, कैसे बता सकते हो तुम कि जेफ निपर्ट के पास नॉलेज है? अगर तेरे पास नॉलेज नहीं है तो फिर तू कैसे बोल सकते है कि जेफ निपर्ट के पास नॉलेज है? हाँ, वो तेरे को अंदर से फीलिंग आते हैं ना, इमोशन आते हैं ना, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है। और तुमको थैंक यू बोलता है। और फिर तुमको लव यू बोलता है। चलो हम भी बोलेंगे लव यू। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, 100 लोग देख रहे हैं अभी तक, क्या बात है। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for your attendance and participation at another Instagram live session by the one and only Aman Dugal, by the King of Kings Aman Dugal, by your undisputed champion Aman Dugal. Do you know why I debate? Because a debate is the ultimate test. Which is the ultimate test. Who knows more and who knows more right now? एडिट करके वीडियो कोई भी बना सकता है, आर्टिकल छाप के कोई भी लिख सकता है, कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है। पर आओ ना, हमारे सामने आओ, तुम्हारे अथॉरिटी फिगर्स को लाओ और हम उनको या हम तुमको उनकी औकात दिखाएंगे। I've said this once and I'll say it again. The global fitness education leader is not America, it's not Europe, it's not Australia. The global leader in fitness education is India. And last year, there was only one course which demonstrated that India is the global leader in fitness education. Now, there are many more courses offered by my students. You don't like my attitude, don't join ADU. Join their courses. Learn from them. And then you won't have to follow idiots like Qasim Hansen and Brad Schoenfeld. And Kamal Patel's Examine. There's only one man who knows how this industry works. That's me. Thank me. Worship me. And be grateful. Out.